Hello, this is Kamini from Speak Like Kamini and welcome to today's video on Vocabulary Challenge Day 12. Today we are going to take up alphabet M और उससे हम 6 synonyms simpler sounding words के discuss करने वाले हैं. If you missed other videos from the same series, you can always watch them in the playlist section. The first word on the list today is majestic, which means royal, जिसे हम हिंदी में शाही भी कहते हैं. For example, the lion has a majestic gait. मतलब जो बबर शेर होता है जिसे हम जंगल का राजा बोलते हैं, उसकी चाल बहुत ही मैजेस्टिक या शाही होती है. So यहाँ पर हम वर्ड लगा रहे हैं majestic. The next word on the list is mellifluous, which means melodious, जिसे हम हिंदी में मधुर भी बोलते हैं. Let's take an example. She has a mellifluous voice. मतलब उनकी जो आवाज़ है वो बहुत ही मधुर है, मीठी है. The next word on the list is munificent, which means very generous. इसे हम हिंदी में उदार बोलते हैं. For example, the munificent woman gave away all her savings to the charity. वो जो इतनी दयालु औरत है, उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स, अपनी सारी बचा हुआ धन संपत्ति एक चैरिटी में दे दी. तो यहाँ पर हम वर्ड लगा रहे हैं munificent for very generous. The next word on the list is meticulous, which means very careful. बहुत ही ध्यानपूर्वक करने वाली कोई चीज़ या कोई इंसान हम उसे बोलते हैं meticulous. For example, the project requires meticulous efforts. मतलब इस प्रोजेक्ट पे हमें बहुत ही ध्यान से काम करने की ज़रूरत है, बारीकी से स्टडी करने की या उस पर काम करने की ज़रूरत है. The next word on the list is methodical, which means orderly. जब हर एक चीज़ तरतीब से हो तो हम उसे बोलते हैं methodical. For example, she always keeps her things in a methodical manner. वो अपनी चीज़ें हमेशा बड़े तरतीब से रखती हैं. So यहाँ पर हम वर्ड लगा रहे हैं methodical. The next word on the list is mesmerize, which means to hold someone's attention completely. किसी को मंत्र मुग्ध कर देना, उसे हम बोलते हैं mesmerize. For example, everyone was mesmerized by her beauty. सब उनकी खूबसूरती को देखकर मंत्र मुग्ध हो गए. Alright, with that we have come to the end of this video. I hope you enjoyed learning these words and will try practicing them in your conversation next time. Tomorrow I'll be back with another word. If you have any question pertaining to this video, feel free to write in the comment box. You can also follow us on Facebook, Twitter and Instagram, the links to which have been shared in the description box. Alright then, till next time, it's bye-bye from Speak Like Kamini.